बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक हम पढ़ेंगे वो आपको सामने नज़र आ रही है। ये तमाम स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। इस बुक में जो कंटेंट्स हम चैप्टर्स की फॉर्म में स्टडी करेंगे वो चैप्टर 12 से स्टार्ट होते हैं और चैप्टर 21 तक कंप्लीट होंगे। ये टोटल 10 चैप्टर्स बनते हैं। इनका आगाज़ पहले चैप्टर 12 से जो होता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जो कि चार्जेस को मोशन में स्टडी करना पर मुश्तमिल चैप्टर है। उसके बाद करंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगे उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस की वजह से जो करंट डेवलप होती है वो हम 15 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्टडी करेंगे। एक चैप्टर 16 में हम करंट को स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट करंट की बजाय अल्टरनेटिंग करंट का कंप्लीट चैप्टर है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इस ये किसी डिवाइस से पास होती है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो 17 चैप्टर हम पढ़ेंगे डिफरेंट सॉलिड्स के बारे में, इसलिए इसका नाम फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स रखा गया है। सॉलिड्स के बारे में हम जानते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर होते हैं। पर्टिकुलरली वी विल फोकस एट द एंड ऑफ सेमीकंडक्टर। और इस सेमीकंडक्टर की ब्रांच में हम एक पूरा चैप्टर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी करेंगे। लास्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के हैं, और इसमें 19 जो है ना आगाज़ है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट होता है। इसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो मॉडर्न फिजिक्स का ही चैप्टर है, और लास्ट बार हम न्यूक्लियर फिजिक्स को ये चैप्टर को स्टडी करेंगे। इससे एक बात वाज़ह होती है कि हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से न्यूक्लियर फिजिक्स तक जितनी फिजिक्स पढ़ेंगे ये स्मॉल एटॉमिक लेवल फिजिक्स कहलाती है, एटॉमिक फिजिक्स कहलाती है। और क्योंकि हम एटम को स्टडी करेंगे फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक, एटम ही को ही स्टडी करेंगे, उसी ही की प्रॉपर्टीज की वजह से जो फिनोमेना डेवलप हुए हैं उनको स्टडी करेंगे। लास्ट चैप्टर में वैसे थोड़ा सा आगे एटम से आगे बढ़ते हुए न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रल पार्ट है एटम का, और मज़ीद सेंटर के अंदर छोटे छोटे ज़रे हैं जिन्हें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं, उसकी स्टडी को हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। तो लास्ट चैप्टर हम न्यूक्लियर फिजिक्स पर पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में हम जो चीज़ें स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन से। इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन में दो टर्म्स हम देखेंगे, एक इलेक्ट्रिक चार्ज और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को डिफाइन करेंगे। और एक पहला टॉपिक 12.1 जो कि कूलम्स लॉ है, कूलम लॉ को स्टडी करेंगे। कूलम लॉ की स्टेटमेंट, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, इसकी एक्सप्लेनेशन, और फाइनली जो क्वेश्चन लास्ट पे बनेंगे इन आर्टिकल से वो हम लिखेंगे। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन से आगाज़ करते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम डिफाइन करते हैं कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन करते हैं कि स्टडी ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये ज़रूरी नहीं है कि चार्ज खुद ब खुद रेस्ट पे हो, बल्कि बहुत सारी फोर्सेस उस पर लग रही हो सकती हैं, उसके बावजूद वो रेस्ट पे हो, तो उसको भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक इलेक्ट्रिकल चार्जेस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और दूसरे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इनको हम बारी बारी डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that causes it to experience a force when placed in an electric field। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। और हम जानते हैं कि चार्जेस की दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, विच इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, दिस इज द फोर्स विच होल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट मेक अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और हम जानते हैं कि हमारी बॉडी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, इसलिए हमारी एग्जिस्टेंस भी इसी इलेक्ट्रिकल फोर्स की ही वजह से। नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट आर्टिकल 12.1 कूलम्स लॉ, and starting from statement, this law states that if we have two charges separated by a distance r, then the force between two charges is directly proportional to q1 and q2 and inversely proportional to the square of the distance between the charges.
and this can be mathematically written as shown in the in this equation, and where k is called proportionality constant and value of k is equal to 1 over 4 pi epsilon naught, and the value of k depends upon the system of units used and the nature of the medium present between the two charges. These two charges q1 q2 may be both positive, both negative, or one positive and other negative, but there will be a force of attraction or repulsion between them, and that force can be given by this equation. So k depends upon two factors, one system of units and other medium between the charges, and it also depends upon the epsilon naught. This epsilon naught is called permittivity of free space. So its value of permittivity of free space can be found experimentally by as 8.85 10 to the minus 12 coulomb square per Newton meter squared. So when we put this value, we will get the value of k. जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर हम Q1 चार्ज फोर्स लगाता है Q2 पे, तो एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसी तरह Q2 चार्ज फोर्स लगाएगा Q1 पे, तो उसकी डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ होगी और फोर्स उसके ऑपोजिट होगी। सो इससे ये पता चलता है कि कूलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स, और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे म्यूचुअल फोर्स है, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज सेम फोर्स उसी तरह पहले चार्ज पे। दिस इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट opposite, both charges are same, so they will exert the same force but in opposite direction, so they can be written as F12, force exerted on 1 by 2 is equal to force exerted on 2 by 1, so both are equal but with negative sign. Now how we can prove this mutual reaction between the charges? Now we consider two charges Q1, Q2, and they are separated by a distance r as shown in the figure. Now Q1 first exerts force Q2, then direction of unit vector is r21 as shown in the figure, and the mathematical expression can be written F12 force by 1 on 2 can be written as expression 2. This is equation number 1, can be written in the form of equation number 1, and similarly Q2 will exert force on Q1 by F12 and with unit vector 1 2. So unit vector can be written as R12 with negative sign, and when comparing equation 1 and 2 we get that these two forces are equal but are opposite to each other. So this proves that Coulomb force is mutual force. जैसा कि हमने देखा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस और सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेचर ऑफ मीडियम्स मींस we can place a medium between two charges. So what will be the effect of medium on electrical force between two point charges? There are two very important terms, dielectric medium placed between charges and the point charges. I will define the point charges at the end and dielectric at the end, but what is the effect of this? First we discuss the effect of dielectric medium on the electrical force. So when dielectric medium is present between two charges, then force will be reduced by the epsilon r times. This is called permittivity of the medium. Higher the permittivity, smaller will be the electric force. Force will be reduced more and more as epsilon r is higher. So epsilon naught shows the air present between the two charges, and this shows epsilon r shows the medium dielectric medium between the charges. So this equation Coulomb according to Coulomb law, force equation can be replaced with 1 over 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 divided by r squared, and comparing this factor without epsilon r is called force with air and epsilon r with dielectric medium. So force will be reduced by 1 over epsilon r times. Now what is dielectric? Dielectric is an insulator
medium, insulating medium between the place between the two charges. So insulator may be a plastic, maybe a rubber, maybe a wood, maybe any other liquid, water, etc. And at the last, the what are point charges? Point charges are the charges whose size is small as compared to distance between them. So charges are small, sizes of the charges is small as compared to distance between them. Then these charges are called point charges. Now at the last, in Article 12.1 Coulomb law, what are the possible questions which may be asked in the exam? 3 short questions are possible and 1 long question is possible. And these short questions and long questions are given as short question may be of 2 marks, long question may be of 5 marks. What is Coulomb law? State it and write mathematical form. What is the effect of medium between the charges? What is the effect of medium between the charges upon Coulomb force? And define electrostatic and electric force, which we have already defined in the previous slides. And long question, there is only long one question. State Coulomb law for electrostatic force. Discuss its vector form and also prove the mutual Coulomb force is a mutual force and prove it. F12 is equal to minus F2